Actually, we started bioinorganic chemistry, uh, and last time we talked about the iron storage and its transport. Uh, Today, we'll be taking the zinc bioinorganic chemistry. So, iron, there are still other enzymes and things which are comprised of iron, but they are beyond the scope of this subject. So we'll be now moving toward the zinc. At least we know about the zinc and its importance in biological system. So zinc, this is this is mainly hydrolysis enzymes which are classified into many types. One of them, they are called hydrolysis enzymes. So zinc, they are mainly belonging to those enzymes. They have less acidity greater than magnesium, less exophilic, so they can trigger redox reaction by its electron withdrawing properties. मतलब रिडॉक्स रिएक्शन में भी बहुत ज़्यादा रेडिली हिस्सा लेते हैं जिंक के जितने भी enzymes है प्रोटीन्स है typical structure for zinc containing enzyme, that is zinc is having tetrahedral structure. So typical tetrahedral binding site of zinc 2 plus, at least one histidine and two more histidine or cysteine groups are attached to zinc. ठीक है, मतलब इसके सराउंडिंग में आपको हिस्टिडीन नजर आएंगे या सिस्टीन नजर आएंगे ज़्यादातर, और स्ट्रक्चर जो जिंक का होगा वो जिंक सराउंडिंग में जो जिंक का होगा वो टेट्राहेड्रल होगा। फोर्थ कोऑर्डिनेशन साइट जो है वो इसमें हाइड्रोक्साइड वाटर या कोई और सबस्ट्रेट के साथ ऑक्युपाइड होगा। So two histidine, one is cysteine, and the fourth substrate is hydroxide water or other substrate. Back bonding to the imidazole 7 function increases its acidity. मतलब हिस्टिडीन में या इन चीज़ों में जो इमिडाजोल रिंग्स होते हैं इनको ये बैक बॉन्डिंग करते हैं, तो इससे इनकी एसिडिटी में इंक्रीज आता है। दे आर हैविंग नॉन प्रोटीन इन्वायरमेंट, मेजॉरिटी हम इस तरह कहते हैं, लेकिन अब आजकल जो है जिंक प्रोटीन्स भी लोगों ने बहुत ज़्यादा आइसोलेट की, और इसके बारे में मतलब जिंक केमिस्ट्री इज वाइड स्प्रेड केमिस्ट्री इनसाइड बायोलॉजिकल सिस्टम। Zinc 2 plus prefers coordination number 6, 4 भी है और 6 भी है। सो अगर आप कहते हैं कि 4 होगा तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, और अगर 6 होगा सो देन इट इज टेट्राहेड्रल। D10 सिस्टम है इसका, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर डज नॉट इम्प्रिंट अ स्पेशल ज्योमेट्री। ठीक है, इसका सिस्टम जो है आफ्टर कोऑर्डिनेशन इट इज बिकमिंग D10। नाउ हम कहते हैं कि जिंक जो है ये पहले ही इस स्लाइड में हमने पढ़ लिया था कि इसमें ज़्यादातर जिंक जो है ये नॉन प्रोटीनेशियस होते हैं, बट स्टिल people are working on it and they have discovered that zinc is producing protein body structure as well. So zinc, the value of zinc from a single zinc enzyme to a key element of life. So in this slide we will be covering that. The nutritional essentiality of zinc for the growth of living organisms had been recognized by long before zinc biochemistry began with the discovery of zinc in carbonic anhydrase in 1939. मतलब हम ये कह सकते हैं कि जिंक एंजाइम्स तो अभी रिसेंटली डिस्कवर हुए हैं, लेकिन जिंक बायोकेमिस्ट्री जो है ये बहुत पुरानी है। ये एक एसेंशियल एलिमेंट के तौर पे कैसे आया है तो उसके बारे में अभी बात कर रहे हैं। सो जिंक पहले जो डिस्कवरी आई थी तो जिंक एंजाइम्स में आई थी, वो जिंक कार्बोनिक एनहाइड्रेज और इस तरह के एंजाइम्स में आई थी। The presence of zinc as a catalytic and structural cofactor in a few hundreds enzymes. ठीक है, मतलब ये कोफैक्टर ही होता है, मेटल कोफैक्टर होता है और बाकी प्रोटीन बॉडी होती है या एंजाइम बॉडी होती है जिसमें ये पड़ा होता है। लेकिन जिंक के बगैर कैटालिसिस जो जो एंजाइम फंक्शन प्ले करता है या रोल प्ले करता है वो आप इमेजिन नहीं कर सकते।
This is the zinc which is performing actually the function of the carbonic anhydrase or carboxypeptide enzymes like these. Okay? So the zinc presence is actually involved in the catalytic and structure properties of the enzymes. In the 1980s, the field again gained momentum with the new principle of zinc fingers proteins. मतलब ये रिसेंटली डिस्कवर हुए हैं जिंक फिंगर प्रोटीन्स जो हैं ये आए हैं तो इसके बाद लोगों ने जिंक की केमिस्ट्री जो है ये फिर और भी इम्प्रूवमेंट इसमें आ गई इन विच जिंक हैज स्ट्रक्चरल फंक्शन इन डोमेन्स एंड इंटरेक्ट विद अदर बायोमोलिक्यूल्स जिंक प्रोटीन जो है ये दूसरे बायोमोलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं और बॉडी के जो एसेंशियल फंक्शंस होते हैं उनमें रोल प्ले करते हैं सो जिंक फिंगर्स जो हैं ये एक्चुअली प्रोटीन्स प्रोटीनेशियस जिंक होते हैं zinc enzymes or zinc proteins होते हैं zinc containing proteins which are playing a variety of roles inside the body. Zinc 2 ions also play a role in cellular regulation. ठीक है cellular regulation में भी role play करता है like essential ions like sodium, potassium, calcium इसकी तरह role भी play करता है cellular regulations में. So it is also called micronutrient. इतनी हद तक ये चला गया कि मतलब ये माइक्रोन्यूट्रिएंट की शक्ल में भी लोग मतलब सेल्स जो हैं इसको यूज कर रहे होते हैं द माइक्रोन्यूट्रिएंट जिंक हैज मच ब्रॉडर फंक्शन देन एनी ऑफ द अदर ट्रांजिशन मेटल आयंस इंक्लूडिंग आयरन तो इसके जो प्रॉपर्टीज हैं वो किसी भी ट्रांजिशन मेटल आयन से ज़्यादा हैं या फंक्शन जो हैं किसी भी ट्रांजिशन मेटल आयन से ज़्यादा हैं बट इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर सेलुलर फंक्शन एज वेल सो जिंक की जो ओवरऑल केमिस्ट्री है हिस्ट्री जो है इसकी अगर आप इसको देख लें तो इसमें न्यूट्रिशनली जिंक एसेंशियल जिंक जो है इसकी डिस्कवरी आई थी 1869 से 1963 के दरमियान फिर जो जिंक एंजाइम्स और प्रोटीन्स के बारे में जो स्टडी की गई है वो 1939 से लेकर 2006 तक है और जिंक इन सेलुलर सिग्नलिंग एंड कंट्रोल ऑफ सेलुलर जिंक जो है वो मतलब 2005 एंड ऑनवर्ड्स से जो ये स्टडी है ये अभी शुरू है इसके बारे में अभी साइंटिस्ट पढ़ रहे हैं जिंक एज एन एसेंशियल ट्रांजिशन मेटल आयन ठीक है मतलब ये किस तरीके से बना था कि जिंक ट्रांजिशन मेटल आयन भी है और एसेंशियल भी है मतलब इसके बगैर लाइफ की जो फंक्शंस होते हैं वो आप इमेजिन नहीं कर सकते सो जिंक इज having some roles inside biological systems. So, Jules Rollin, who trained under Louis Pasteur, reported in 1869 that zinc is essential for the growth of the fungus Aspergillus niger. His work is remarkable and decisive because he used chemically defined media to arrive at his conclusion. ये एक साइंटिस्ट है उसने फंगस पे काम किया था और इसने 1869 में कहा था कि जिंक जो है इस फंगस के लिए इसेंशियल है फॉर इट्स ग्रोथ विदाउट जिंक दिस फंगस एस्परजिलस नाइगर जो है ये ग्रोथ नहीं कर सकता तो इसने उस दौर में 1869 में जिंक को इसेंशियल करार दिया था फॉर एस्परजिलस नाइगर In the 1920s, it was discussed whether the presence of zinc in human tissue is the result of environmental exposure that would affect human adversely. Investigators at the Harvard School of Public Health in Boston measured zinc concentration in human tissues and concluded that zinc is present endogenously and may serve biological functions. मतलब इस तरह हुआ था कि 1920s में साइंटिस्ट ने जिंक पे काम शुरू किया एंड दे कंक्लूडेड दिस दैट जिंक जो है ये इसकी जो हमारी बॉडी के अंदर जो प्रेजेंस है वो किस तरीके से आती है या ये एनवायरमेंटल एक्सपोजर से आती है या किसी फूड की कंजम्पशन से या इस तरह के तो इसमें इन्होंने जिंक की जो कंसंट्रेशन है वो टिश्यूज में इन्होंने मेजरमेंट की है और इन्होंने कहा है कि दिस इज प्रेजेंट इंडोजीनियसली मतलब ये
सेल्स के बाहर पड़ा होता है, मतलब आप इसको क्या कहते हैं, ले लेते हैं एज अ फूड आइटम, और फिर ये अपनी जो बायोलॉजिकल फंक्शंस है उसको प्ले करते हैं. इट इज इंस्ट्रक्टिव टू रीड द कंक्लूचर ऑफ ड्रिंकर्स एंड कॉलियर्स. One is struck by the failure of investigators to recognize this normal universality of zinc, lead us to believe that zinc is indispensable for the normal functioning of the body. मतलब इन्होंने फिर ये कहा है कि ये ह्यूमन के लिए भी ये एसेंशियल मेटल आयन है. विदाउट जिंक human body cannot perform its function. Considerable time elapsed after Rowling's original observation until zinc was shown to be essential for rats and for humans in 1961. ठीक है, तो ये जो है जिंक जो है ये अगर फंगस के लिए भी इसेंशियल है तो ये रैट्स के लिए भी इसेंशियल है और ह्यूमंस के लिए भी इसेंशियल है. विदाउट जिंक यू कैन नॉट इमेजिन ह्यूमन बॉडी. So zinc enzymes are inside human body. The biochemistry of zinc began in 1939 when erythrocyte carbonic anhydrase was found to contain stoichiometric amount of zinc, and the zinc was shown to be essential for its enzymatic activity. जिंक की जो enzymatic chemistry है ये 1939 से शुरू हुई है जब कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो है वो डिस्कवर हुआ था. A second zinc enzyme, bovine pancreatic carboxypeptidase, was identified only 15 years after the discovery of zinc carbonic anhydrase. जो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है वो जिंक के कार्बनिक एनहाइड्रेस के 15 years later जो है इसकी भी डिस्कवरी हो गई. सो अगर आपको याद हो, सो दीज टू एंजाइम्स कार्बनिक एनहाइड्रेस एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेज आर वेरी वेरी एसेंशियल. कार्बनिक एनहाइड्रेस दिस मेंटेन्स द ब्लड पीएच. ठीक है, इसके अलावा भी इसके फंक्शंस हैं, बट द मेजर फंक्शन इज द बफरिंग एक्शन और द ब्लड पीएच मेंटेनेंस. अगर आप उसको देख लें तो ब्लड पीएच अगर मसला हो तो उसमें भी आयरन बाइंडिंग में भी मसला हो सकता है, सॉरी ऑक्सीजन बाइंडिंग में और ऑक्सीजन रिलीज में भी मसला हो सकता है. सही है. सिमिलरली कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो है वो प्रोटीन्स को, मतलब एंड टर्मिनस प्रोटीन्स को उनकी पेप्टाइड चेन पे उसको क्लीव करता है. ठीक है, और उसको डिफरेंट अमीनो एसिड्स या सबस्ट्रेट में कन्वर्ट करता है. तो ये जो है पेंक्रियाटिक एंजाइम है, और इसके अगर इसमें माल फंक्शन हो जाए तो द पर्सन बिकम्स डायबिटिक. तो अगर आप दोनों एंजाइम्स को देख लें, विदाउट दीज टू एंजाइम्स डायबिटिस इज अ वेरी क्रिटिकल डिजीज. ठीक है, और दूसरा जो है कार्बनिक एनहाइड्रेस जो है वो ब्लड पीएच को मेंटेन करता है. तो इसका मतलब है कि दोनों एंजाइम्स जो हैं बहुत ज़्यादा important here for biological systems. Without them, you cannot imagine the biological system. Zinc is also present as a zinc protein in all classes of enzymes. अब zinc protein भी discover हुए हैं recently. So zinc proteins में भी ये मौजूद होता है, like oxidoreductases, transferases, hydrolases, lyases, isomerases and ligases. ये सारे enzymes जो हैं इनमें zinc जो है मौजूद होता है. When the entire human genome was scanned for zinc binding signature, it was predicted that at least 3% of the genes encode zinc proteins. मतलब ये कि ह्यूमन जीनोम भी जो है वो जो ह्यूमन जीनोम होता है इसमें 3% जो होता है ये जिंक प्रोटीन का रोल होता है. तो इसका मतलब ये कि जो लाइफ की एक्सपेक्टेंसी है उसमें भी इसका रोल होता है. द टोटल नंबर ऑफ जिंक प्रोटीन इज 3207 inside the biological system. Now, coming toward the carboxypeptidase. Carboxypeptidase is an enzyme that catalyzes the hydrolysis of proteins at their C terminus. ठीक है, it is a metalloenzyme containing zinc 2 plus at its active site. Amino acid where the positively charged side chains arginine is near the active site. मतलब कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो है ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करता है प्रोटीन की. दूसरा, इसमें जिंक मौजूद होता है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में. और तीसरा, इसमें ये जो है ये एक अमीनो एसिड जो है वो विद अ पॉजिटिवली चार्ज साइड चेन अर्जिनिन जो है इज नियर द एक्टिव साइट, ये भी मौजूद होता है इसके साथ.
Carboxypeptidase is an enzyme synthesized in the pancreas and secreted into the small intestine. ठीक है, पेंक्रियाज में ये एंजाइम बनता है और स्मॉल इंटेस्टाइन को ये सीक्रेट होता है. This enzyme hydrolyzes the first peptide or amide bond at the carboxyl or C terminal and end of proteins and peptides. ठीक है, ये एंजाइम जो है ये एमाइड बॉन्ड को तोड़ता है, उसको हाइड्रोलाइज करता है. It has a stronger preference for those amino acids that have aromatic or branched hydrocarbon chains. ये एंजाइम हर एक प्रोटीन को नहीं तोड़ता, बल्कि उन हाइड्रोकार्बन्स को तोड़ता है जिनमें एरोमेटिक या ब्रांच्ड चेन्स होते हैं. कार्बोक्सीपेप्टाइडेज का मैकेनिज्म जो है ये आप देख सकते हैं कि कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में जिंक होता है which is connected to 2 histidine 1 glutamic acid. This is connected when it is performing its function. This is arginine. ये देख लें, arginine इसके साइड पड़ा होता है. इसमें इधर हमने पढ़ा था कि an amino acid with a positively charged side chain is near the active site. Without this amino acid, you cannot imagine the function of the carboxypeptidase. So this is the arginine. This is the carboxypeptidase enzyme. This one is the protein which will be cleaved. Okay? So what happens? This is hydrolyzed. Now what happens? This oxygen, this binds with the zinc center, and this arginine is present near to the protein which will be cleaved. There is a water molecule over here which bonds, produce a hydrogen bond with the peptide hydrogen, and there is the glutamic acid is present which also produces the hydrogen bond with water. So what happens? The zinc ion, this one, the zinc ion, this cleaves the peptide chain over here. Like you may see, this bond is cleaved, water molecule attacks over here, so you will get, this is COOH. बाकी तो वही सबस्ट्रेट है जो जिंक के साथ अटैच्ड है, और इधर जो है ये टायरोसिनॉल से ये एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके ये अपने प्रोटीन बॉडी बना देता है, और ये टायरोसिनॉल फिनाइल आयन में मतलब उसमें कन्वर्ट हो जाता है, और इधर जो है ये दूसरा. तो इस तरीके से ये जिंक कार्बोक्सीपेप्टाइडेज का जो जिंक होता है, दिस परफॉर्म्स द कैटालिटिक फंक्शन and hydrolyzes the peptide chain of the proteins. What happens at the active site, the peptide chain, they are present like this: NH3 peptide, this is CONH and CRH. This is the group. The arginine is present near to it, which produces the bond with this moiety. You may see that there is dipole-dipole interaction between the two moieties. The arginine produces the dipole interaction with the protein body, which will be cleaved. So the peptide or protein is bound at the active site by electrostatic attraction between its negatively charged carboxylate ion and arginine 145. So this electrostatic interaction or dipole-dipole interaction is present between the arginine and the carboxylate ion of the protein or peptide. So what happens? This bond is enabling the zinc ion to produce. Zinc acts as a Lewis acid toward the carbonyl group, carbonyl oxygen. So it is acting as a Lewis acid and producing a bond with the carbonyl oxygen, increasing the positive character of the carbonyl carbon. जब ये इसके साथ बॉन्डिंग कर देता है तो इसके जो पॉजिटिव कैरेक्टर है, कार्बोनिल कार्बन का जो पॉजिटिव कैरेक्टर है, ये इंक्रीज हो जाता है. सो वाटर मॉलिक्यूल takes the carbonyl carbon. As a result of this
O of water molecule, this takes on the carbonyl carbon, nucleophilic acyl substitution occurs over here, and you will get arginine group is present like that. The group is cleaved. This is converted to an H3 plus sign, and this is cleaved COO minus. So the carboxypeptide, the mechanism is based upon the role of the arginine and the carboxypeptidase enzyme, which is cleaving the peptide chain. Now, another very important enzyme which contains zinc, that is called carbonic anhydrase. The carbonic anhydrases are carbonate dehydratases. इनको दोनों इनके नाम है, या तो कार्बोनेट डिहाइड्रेटेज इनको कहते हैं डिहाइड्रेटेज, या कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम कहते हैं. These enzymes form a family of enzymes that catalyze the interconversion between carbon dioxide and water and the dissociated ions of carbonic acid, bicarbonate and hydrogen ion. मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके उनको कार्बनिक एसिड में कन्वर्ट करता है, विच डिसोसिएट इनटू कार्बन बाइकार्बोनेट एंड H+ ion. They are therefore classified as metalloenzymes because they contain the zinc, so they are also called metalloenzymes. The enzyme maintains acid-base balance and helps transport carbon dioxide. अगर ये एसिड बेस बैलेंस ना हो, so carbon dioxide transport and oxygen release will not occur inside the capillaries. ठीक है, कैपिलरीज में ये चीज, ये काम, ये फंक्शन फिर नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल हो जाएगी. कार्बोनिक एनहाइड्रेस हेल्प्स रेगुलेट पीएच एंड फ्लूइड बैलेंस. एक इसके फंक्शन में जो आता है, एक तो ये है कि ये पीएच को मेंटेन करता है और दूसरा फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करता है. डिपेंडिंग ऑन इट्स लोकेशन, द रोल ऑफ द एंजाइम चेंजेस स्लाइटली. फॉर एग्जांपल, कार्बोनिक एनहाइड्रेस प्रोड्यूसेस एसिड इन द स्टमक लाइनिंग. अगर ये स्टमक में मौजूद हो तो ये एसिड प्रोड्यूस करता है. इन द किडनी, द कंट्रोल ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस इन्फ्लुएंस द वाटर कंटेंट ऑफ द सेल. और अगर किडनी में मौजूद हो तो बाइकार्बोनेट आयन जो है ये वाटर कंटेंट को कंट्रोल करता है. द कंट्रोल ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस आल्सो इन्फ्लुएंसेस द वाटर कंटेंट इन द आइज. ये अगर आइज में भी मौजूद हो तब भी ये क्या करते हैं, वाटर कंटेंट को मेंटेन करते हैं. Inhibitors of carbonic anhydrase are used to treat glaucoma, the excessive buildup of water in the eyes. ग्लोकोमा जो है इसमें क्या होता है, वाटर बिल्ड होता है इन द आइज. तो ये इसके इनहिबिटर्स, जो कार्बनिक एनहाइड्रेस के इनहिबिटर्स हैं, वो फिर ग्लोकोमा को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है फॉर आई डिजीजेस. Blocking this enzyme shifts the fluid balance in the eyes of the patient to reduce fluid buildup, thereby relieving pressure. तो ये एंजाइम क्या करते हैं, सिर्फ आइज में ये द इनहिबिटर्स जो हैं ये इस एंजाइम को इनहिबिट करके फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करके वो जो प्रेशर बिल्ड होता है तो उसको मेंटेन कर देते हैं, एंड देयर बाय द डिजीज इज कंट्रोल्ड. सो कार्बनिक एनहाइड्रेस इज प्रोड्यूस, मतलब ये तो एबनॉर्मल कार्बनिक एनहाइड्रेस की बात कर रहे हैं. नॉर्मल कार्बनिक एनहाइड्रेस दे आर इम्पोर्टेंट फॉर रेगुलेटिंग पीएच एंड फ्लूइड बैलेंस. ठीक है, तो फ्लूइड बैलेंस आप लोगों ने देख लिया कि फ्लूइड बैलेंस कहाँ कहाँ पे हो सकता है. किडनी में हो सकता है, स्टमक में हो सकता है, आईज में हो सकता है. सो दीज फ्लूइड बैलेंस आर इम्पोर्टेंट and they are maintained by carbonic anhydrase enzymes. Bohr effect. Now the bicarbonate effect. This is also called Bohr effect, pH maintenance treatment. The Bohr effect is a way to describe hemoglobin's oxygen binding affinity. मतलब हम इसको कैसे define करते हैं? This is the affinity of oxygen binding, oxygen hemoglobin binding affinity. ठीक है, तो इस effect को हम Bohr effect कहते हैं. The Bohr effect was described by Christian Bohr in the year 1904, and it refers to a shift in an oxygen dissociation curve
that is caused by a change in concentration of carbon dioxide or a change in the pH. इसको हम क्या कहते हैं? This is referred to the shift in oxygen dissociation curve. ठीक है, और ये जो शिफ्ट आता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में, ये एक्चुअली किस चीज से आता है? दिस इज बिकॉज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और दिस इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन पीएच। मतलब ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है इन लंग्स। द हेमोग्लोबिन इज द सेम मॉलिक्यूल, व्हाई इट डिलीवर्स दिस ऑक्सीजन टू द कैपिलरीज। तो ये ऑक्सीजन जब कैपिलरीज की तरफ चला जाता है तो उधर ये इसकी बाइंडिंग कैपेबिलिटी जो है वो वीक हो जाती है। हालांकि वही हेमोग्लोबिन है जो लंग्स में होता है, लेकिन ये हेमोग्लोबिन जब सेल्स की तरफ चला जाता है, मतलब कैपिलरीज की तरफ चला जाता है, तो इसमें फिर क्या चेंजेस आ जाते हैं कि ये ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेबिलिटी को नहीं रख पाता, मतलब डिसोसिएशन जो है वो डोमिनेट कर जाता है। तो इसके बारे में ये कह रहे हैं कि this dissociation, this is maintained by number one, two factors are there. Number one is the concentration of carbon dioxide and the second one is change in pH. Capillaries में pH थोड़ा acidic बन जाता है, तो acidic pH किस चीज से आता है वो उसके बारे में बात करेंगे। Essentially, an increase in carbon dioxide results in lowered blood pH, which lowers oxygen hemoglobin binding. हर एक कम्प्लेक्स के लिए उसकी स्टेबिलिटी के लिए कोई ना कोई पीएच ज़रूर होता है कि उस पर उसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है। ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन की स्टेबिलिटी जो है ये ज़्यादातर अल्कलाइन मीडियम में ज़्यादा होती है। तो अगर ब्लड जो है अल्कलाइन हो तो फिर ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर ब्लड पीएच एसिडिक बन जाए तो ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन की स्टेबिलिटी वीक हो जाती है। तो इसकी वो कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज जो होता है इनसाइड कैपिलरीज, दिस रिजल्ट्स इन द लोअर ब्लड पीएच, मतलब ब्लड का जो पीएच है वो एसिडिक बन जाता है, कम हो जाता है। सो 1 to 7 इज एसिडिक, 7 is neutral, 7 to 14 is basic. So lower blood pH means acidic blood pH. The opposite is true where a decrease in the concentration of carbon dioxide raises the blood pH. अब opposite क्या होता है? Like in lungs, तो उधर blood pH increase हो जाता है, मतलब अल्कलाइन की तरफ चला जाता है, और and that is happening in lungs. तो इसका मतलब ये कि opposite condition फिर lungs में होती है, which raises the rate of oxygen hemoglobin binding. तो उधर ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन की बाइंडिंग प्रॉपर्टीज इंक्रीज हो जाती है, तो उधर वो पिक करता है ऑक्सीजन लंग्स में और इधर ये डिलीवर करता है। रिलेटिंग द बोहर इफेक्ट टू कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज सिंपल। अब हमारा काम तो हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंडिंग नहीं है, हम एक्चुअली पढ़ रहे हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज का रोल। सो कार्बोनिक एनहाइड्रेज स्पीड अप the reaction of carbon dioxide reacting with water to produce hydrogen protons and bicarbonate ions. कार्बनिक एनहाइड्रेज ये सेल्स में मौजूद होते हैं या कैपिलरीज में मौजूद होते हैं, जो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का आपस में रिएक्शन करके हाइड्रोजन प्रोटॉन्स बनाते हैं। तो ये जब हाइड्रोजन प्रोटॉन्स जब बढ़ते हैं इनसाइड कैपिलरीज, सो द ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन बाइंडिंग कैपेबिलिटी इज डिक्रीज्ड, तो हैंस द ऑक्सीजन इज डिलीवर्ड टू द सेल्स। ठीक है, तो इसमें ये बोहर इफेक्ट में कार्बनिक एनहाइड्रेज के बगैर जो है आप बोहर इफेक्ट को सोच भी नहीं सकते। कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम का स्ट्रक्चर जब आप देख लें तो इसमें आपको हिस्टिडीन ग्रुप्स नजर आएंगे, 3 हिस्टिडीन्स एंड 1 हाइड्रोक्सिल और वाटर मॉलिक्यूल मौजूद होगा। टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होते हैं हिस्टिडीन ग्रुप्स, द होल स्ट्रक्चर इज टेट्राहेड्रल। ठीक है, दिस इज 3D structure of the carbonic anhydrase enzymes. Like this one, there are 3 histidine groups and 1 water molecule. What happens in the catalytic cycle? In the first step, hydrogen is released, and the water molecule is converted to hydroxyl group. So the hydroxyl group, this is conversion of the hydroxyl group. This is actually done for the abstraction of carbon dioxide.
तो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है सेल्स में, जब वो कैटालिटिक साइकिल के अंदर आता है, सो द हाइड्रोक्सिल ऑफ द जिंक or carbonic anhydrase, this takes on the carbon of the CO2, where when it takes on the carbon, the CO, one of the CO bond is shift toward oxygen. So the bond is produced between zinc oxygen hydroxyl group and C of the carbon dioxide. So you may see that this is a kind of the हाइड्रोकार्बन, ठीक है, मतलब एक किस्म से बाइकार्बोनेट आयन बन भी गया. So HOCO minus ion is produced. This O is interacting with the zinc. When H2O comes, this whole ion is replaced by H2O, and this is released as HCO3 minus ion. Whereas the original carbonic anhydrase is regenerated, which again take part in the catalytic cycle for the production of the bicarbonate ions. Hence, the whole catalytic cycle is regulated. If you people have any question regarding this lecture, you may ask.